डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ EDU101 का लेसन नंबर 26 उसकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट शेयर करूंगा। और तो ऑब्जेक्टिव पार्ट शुरू करने से पहले चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट जो MCQs है, इन विच सोसाइटीज़ did oral communication play a significant role in transmitting information? Pre-literate societies, Chinese society, ancient Indian society, Egyptian society। तो ऑप्शन नंबर है ए, प्री-लिटरेट सोसाइटीज़। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 2, व्हाट वर द गोल्स ऑफ एजुकेशन इन प्री-लिटरेट सोसाइटीज़। तो ऑप्शन है जी टीच सर्वाइवल स्किल्स, टीच ग्रुप हार्मनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर है जी बोथ ए एंड बी, टीच सर्वाइवल स्किल्स एंड बी ऑप्शन टीच ग्रुप हार्मनी। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 3, हु आर द स्टूडेंट इन प्री लिटरेट सोसाइटीज़। तो ऑप्शन है जी ओनली चिल्ड्रन, ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू एज, ऑल चिल्ड्रन, ओनली एडल्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी है ऑल चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ नंबर 4, व्हाट इंस्ट्रक्शनल मेथड वर यूज्ड इन प्री लिटरेट सोसाइटीज़। तो ऑप्शन है जी फॉर्मल मेथड्स, चिल्ड्रन इमीशिएट एडल्ट्स, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी है चिल्ड्रन इमीशिएट एडल्ट्स। नेक्स्ट MCQ नंबर 5, विच एजेंट्स प्लेड रूल इन प्री लिटरेट सोसाइटीज एजुकेशन। ये है जी पेरेंट्स, लिबरल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें सारे ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 6, ड्यूरिंग द चाइनीज इन्फ्लुएंस हु रिसीव्ड एजुकेशन, ऑल मेल्स, लोअर क्लास इंडिविजुअल्स, मेल्स ऑफ द अपर क्लास, फीमेल्स ऑफ द अपर क्लास। तो ऑप्शन नंबर है जी सी, मेल्स ऑफ द अपर क्लास। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, व्हाट वर द एजुकेशनल गोल ड्यूरिंग द चाइनीज इन्फ्लुएंस। ऑप्शन है जी प्रिपेयर एलिट्स टू गवर्न टू एम्पायर अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियन प्रिंसिपल, teach survival skills, promote creativity and innovation, none of the above। तो ऑप्शन नंबर ए है prepare elites to govern the empire according to Confucian principles। Next, what instructional method was primarily used during the Chinese influence? Memorization and recitation, group discussion, hands on experiments, none of the above। तो ऑप्शन नंबर ए है मेमोराइजेशन एंड रिसिटेशन। नेक्स्ट 9 है जी व्हाट कुरिकुलम वाज फॉलोड ड्यूरिंग द चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो वेदास एंड रिलीजियस टेक्स्ट, बी ऑप्शन है जी कन्फ्यूजन क्लासेस, प्रैक्टिकल हंटिंग एंड फिशिंग, रिलीजियस और टेक्निकल टेक्स्ट। ऑप्शन बी कन्फ्यूजन क्लासिक्स। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, which agents were responsible for education during the Chinese influence? Government official, Brahmin, priests, scholars, peasants, liberal leaders। तो ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, in ancient Indian society who are the student। ऑप्शन हैं जी मेल्स ऑफ द अपर क्लास, फीमेल्स ऑफ द अपर क्लास, ऑल चिल्ड्रन, लोअर क्लास। तो ऑप्शन ए है मेल्स ऑफ द अपर क्लास। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 12, व्हाट इंस्ट्रक्शनल मेथड वर यूज्ड इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन, hands on experiments, oral storytelling, none of the above। तो ऑप्शन नंबर ए है मेमोराइजेशन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है जी 13, व्हाट कुरिकुलम वाज फॉलोड इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी।
Vedas and religious texts, Confucian classics, practice hunting and fishing, religious or technical texts. Option A है Vedas and religious texts. Next 14 है who were the agents responsible for education in ancient Indian society? Government officials, Brahmin priests, scholars, parents, liberal leaders. Option number B है Brahmin priests, scholars. Next 15 during the Egyptian influence, who received education? All males, lower class individual, males of the upper class, females of the upper class. तो ऑप्शन है जी मेल्स ऑफ द अपर क्लास. Next 16 what instructional method were used during the Egyptian influence? Memorization and recitation, group discussion, hands-on experiments, none of the above. तो option number A है memorization and recitation. Next is 17 what curriculum was followed during the Egyptian influence? Vedas and religious texts, Confucian classics, religious और टेक्निकल टेक्स्ट. डी है जी एथेंस रीडिंग राइटिंग. तो ये सब तो ऑप्शन नंबर सी है रिलीजियस और टेक्निकल टेक्स्ट. नेक्स्ट 18 है जी MCQs विच एजेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन ड्यूरिंग द Egyptian influence? Government officials, Brahmin priests, scholars, parents, priests and scholars. तो ऑप्शन नंबर डी priests and scholars. 9 है 19 है जी ड्यूरिंग द ग्रीक इन्फ्लुएंस हु आर द स्टूडेंट्स? ऑप्शन है जी ऑल चिल्ड्रन, लोअर क्लास इंडिविजुअल्स, मेल चिल्ड्रन एज 7 to 20 years, फीमेल चिल्ड्रन एज 7 to 20 years. तो ऑप्शन नंबर सी मेल चिल्ड्रन एजेस 7 to 20 years. Next 20 है what were the educational goals during the Greek influence? Prepare elites to govern the empire according to Confucian principles, teach survival skill, cultivate civic responsibility. D है none of the above. तो ऑप्शन नंबर सी है cultivate civic responsibility. नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्ट पार्ट की जाने लेसन नंबर 26 के. What is a pre-literate society? A pre-literate society is a society that existed before the advent of writing. Next है जी MCQ question number 2 who was information transmitted in pre-literate societies? Information was transmitted orally through spoken languages. Next है जी question number 3 what were the goals of education in pre-literate societies? The goals of education in pre-literate societies were to teach survival skills and promote group harmony. Next है जी 4 who are the students in pre-literate societies? All children were considered students in pre-literate societies and there was no grouping according to age. Next 5 है जी question what are the instructional methods used in pre-literate societies? The instructional method were informal and children initiated adults. Next है जी 6 what subjects were influenced in the curriculum of pre-literate societies? The curriculum of pre-literate societies included practices such as hunting, fishing, songs, poems and dances. Question number 7 who were the agents of education in pre-literate societies? The agent of education in pre-literate societies were parents, liberal leaders and religious leaders. Next 8 what was the educational goal during the influence of Chinese education? The educational goal during the influence of Chinese education was to prepare elites to govern the empire according to Confucian principles. Question number 9 who were the students
during the influence of Chinese education. The students during the influence of Chinese education were males of the upper class. Next है जी MCQ question number 10. What instructional method was used during the influence of Chinese education? तो आंसर है जी the instructional method used for memorization and recitation. Next है जी MCQ question number 11. What was the curriculum during the influence of Chinese education? The curriculum consists of the Confucian classics. Next है MCQ question number 12. Who are the agents of education during the influence of Chinese education? The government officials were the agent of education during the influence of Chinese education. Next 13 question है what were the educational goal in ancient Indian society? The educational goal in ancient Indian society were to learn behavior and rituals based on the Vedas. Next है 14. Who are the students in ancient Indian society? The students in ancient Indian society were males of the upper class. Next question number 15. What instructional method was used in ancient Indian society? The instructional method used were memorizing and interpreting secure texts. Next 16 question. What was the curriculum in ancient Indian society? The curriculum considered of the Vedas and religious texts. Next is 17. Who were the agent of education in ancient Indian society? And the Brahmin priests, scholars were the agent of education in ancient Indian society. Next है जी 18. What were the educational goal during the influence of Egyptians? The educational goal during the influence of Egyptians were to prepare priests and scribes for the empire. Next है जी 19. Who were the students during the influence of Egyptians? The students during the influence of Egyptians were males of the upper class. Next question number 20. What instructional method were used during the influence of Egyptians? The instructional method used were memorization and copying texts. तो ये था जी हमारा लेसन नंबर 26 और एजुकेशन 101 की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये लेक्चर वाइज MCQs और क्वेश्चंस हैं, ना कि ये एग्ज़ाम के पास्ट पेपर्स हैं। तो ये आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, यानी कि अगर आप हैंड आउट्स नहीं करते तो आप ये कर सकते हैं ताकि आपका हैंड आउट्स क्लियर हो जाए। हैंड आउट्स की जगह आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ये शॉर्ट लेक्चर्स हैंड आउट्स को यानी कि हर टॉपिक को क्लियर किया गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेंट्स हैं। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं ऑल क्वेश्चंस तो ये ही इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट हैंडआउट से ही बनाए गए हैं, तो ऑल टॉपिक्स हैंडआउट से लिए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इंशाल्लाह तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।